So guys, now we are going to discuss about the kingdom Animalia. This also means kingdom Animalia. Also we have one specialized chapter, chapter number 4, Animal Kingdom, from the 11th standard CBSE. Therefore the characters are very lessly explained, okay, because kingdom Animalia is very large to be discussed. So let's talk about one by one character in detail. First, they are heterotropic. What does it mean by heterotropic? Autotropic is opposite to the heterotropic. Autotropic, who can prepare their own food. Heterotropic depends on plant, so they are heterotropic. They are eukaryotic animal, means they contain true nucleus and they are multicellular without cell wall. पूरा समझ लीजिए. They are heterotropic, depend on plant. They are eukaryotic, they contain true nucleus. They are multicellular. There is no unicellular in Animalia. कोई भी ऐसे यूनिसेल्युलर एनिमेलिया के अंदर नहीं आता है, सभी सभी मल्टीसेल्युलर है एंड विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल नहीं है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया हुआ था. सेकंड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट. हाउ डायरेक्टली एंड हाउ इनडायरेक्टली? सी, देयर आर सर्टेन एनिमल which are directly in contact with the plant body, so they are directly getting the food material, but we has to purchase the food material, then we have to eat it. So we are directly or indirectly depend on the plant. Third one, they digest food and reserve food material is glycogen or food, or you can say fat. अब ये समझ लीजिए कि reserve food material का मतलब क्या होता है. मान लो हम जैसे कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जाते हैं 7:30 को और 12 तक वहीं पे रहते हैं, उसके बाद कोचिंग क्लासेस में डायरेक्ट चले जाते हैं. तो बीच में जो हमें जो भूख लगती है तो हम क्या कैरी करते हैं, हम लंच बॉक्स कैरी करते हैं. तो हमारी बॉडी में भी लंच बॉक्स होता है, जैसे लिवर है और मसल्स हैं. तो हमारी बॉडी में लिवर और मसल एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर सकते हैं और उस एक्स्ट्रा फूड को हम कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल. तो हमारे अंदर रिजर्व फूड मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली ग्लाइकोजन होता है, पॉलीसेकेराइड, किसी किसी में फैट भी होता है. यस. नेक्स्ट कैरेक्टर, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज holozoic, means the ingestion of food material, means that we animal, or now we are human being, we are also belongs to the Animalia category, so we ingest the food material into mouth, so we are holozoic in nature. Next, higher forms show sensory and neuromotor function, neuromotor mechanism. अब हम higher forms है, हम advanced है. Just like when we touch any organ, signals from this organ go to the brain via sensory neuron and reply from motor neuron to that organ. If I take a, you can say a pen or needle, and if I prick on the finger, suddenly I withdraw my hand, suddenly I withdraw my finger just because it is hurting me. So as I prick the finger, these signals go to the brain via sensory neuron and my brain reply my finger that I should withdraw it because it is hurting, it is pinning. So that is replies by the motor neuron. तो सिग्नल कैरी करने वाली ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन से वापस रिप्लाई लेके आने वाले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन. तो ये दोनों न्यूरॉन ऐसे न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कहते हैं. सिक्स्थ वन, मोस्ट ऑफ देम शोस लोकोमोशन. मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल कोई नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ बेंथोनिक एनिमल सी के अंदर जिन्हें हम सीडेंटरी के तौर पे पहचानते हैं, जो स्टेबल होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोकोमोटरी होते हैं. मोस्ट ऑफ देम शोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and which leads to the fertilization and undergo embryonic development. मतलब आप ह्यूमन बीइंग कह लो या तो कोई भी एनिमल कह लो, मोस्ट प्रोबेबली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं. आप ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन बीइंग अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, देयर इज अ मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, एम्ब्रियो, फीटस एंड देन चाइल्ड एंड देन वी बिकम्स अडल्ट. तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम कहते हैं embryonic development. Up to the birth it is called embryonic development. After birth it becomes a life cycle. Yes, so this is fully about the kingdom Animalia.